Himalayan salt doesn't actually come from the Himalayas. It's mined 186 miles away in Pakistan. Thanks to its pink hue and supposed health benefits, the salt has exploded in popularity since the late 2000s. Today, it's turned into lamps, statues, and of course, table salt. But extracting the coveted salt means descending into dark caves, then blasting and carrying heavy rock. अच्छा, हमें प्रॉब्लम जो माइंस से आता है, जो ब्लॉक्स के जो साइजेस होते हैं, बेसिकली हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारी माइंस के अंदर कि हम जो ब्लॉक्स को बहुत अच्छी तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें. We went inside the mine, turning this mountain into 400,000 tons of pink salt each year. The Keoda salt mine, here in the Punjab region of Pakistan, is the second largest salt mine in the world. The pink salt comes from remnants of ancient seabeds that crystallized 600 million years ago. Legend has it, it was actually Alexander the Great's horse that first discovered these salt rocks when it stopped to take a lick. Then, under British rule, salt mining ramped up in the 1870s. Today, it's a popular tourist destination and a working mine, producing the majority of the world's pink salt. All the mining starts here, at the train station. This train takes miners deep into the mountain. Here, tunnels stretch for 25 miles, and it's always 64 degrees Fahrenheit. माइन के टोटल 17 लेवल है, इसके 70 लेवल है, 5 लेवल इसके ऊपर चल रहे हैं, 6 ये ग्राउंड फ्लोर है और 11 इसके नीचे है. 300 miners work these dark chambers. They've used many of the same mining tools for over a century: pickaxes, hand drills, and gunpowder. सबसे पहले हमने ड्रिलिंग की है. ड्रिलिंग यहाँ पे हैंड आगर के जरिए करते हैं. उसके बाद हमने गन पाउडर के जरिए पैकिंग की है. फिर सेफ्टी फ्यूज के जरिए हमने इसको इग्नाइट किया है और साल्ट की ब्लास्टिंग हो चुकी है. खबरदार आप सब सेट पे हो जाएं. खबरदार आप सब सेट पे हो जाएं. इसके बाद हम एक महफूज टाइम जो आधा घंटा कम से कम होना चाहिए, उसके बाद हम उसकी साल्टिंग और लोडिंग स्टार्ट कर लेंगे. Miners will spend up to 8 hours underground at a time. ज़ाहिर बात, हम मैन के नीचे काम करने तकरीबन 30-40 फुट है. हार्ड तो है, लेकिन यहाँ पे मजदूरी अच्छी और वक्त पे मिल जाती है. Only half of the mountain salt is actually mined. The rest is used for structural support, so the chambers don't collapse. Tractors haul the mined salt out of the mountain. Each day, miners excavate over 1,000 tons of salt, or about the weight of 157 elephants. Outside, they search for blocks with the best shape and coloring to send to manufacturers. Once picked, the blocks are loaded up on trucks either by hand or crane and sent across Pakistan. Historically, Pakistan couldn't process this raw pink salt, so much of it was exported to India cheaply. India would treat the salt, label it as made in India, and sell it at a premium. Pakistan saw little of the profits. NPR reported that a ton of salt sold to India for $40 could fetch $300 in Europe. In 2019, a social media campaign calling for the end of salt exports to India went viral. That same year, the Pakistani government banned all salt exports to India. The goal? Returning the profits to Pakistan. 23% जो रॉक सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग थी या जो प्रोडक्शन थी जो पाकिस्तान की, वो इंडिया को हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ फॉर्म में, जो कि फिर वो री एक्सपोर्ट होती थी ओवरसीज़ में सेम मार्केट में जहां हम ऑलरेडी अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइट नाउ. गवर्नमेंट का डिसीजन ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए. But some Pakistani salt exporters suffered. They didn't speak English and couldn't meet Europe's tough import standards. Only about a dozen exporters saw an opportunity to sell products under Pakistani labels directly to Europe. Mohammed was one of them. Every month he purchases 300 tons of salt from the mine for his company Himalayan Decor International. ख्योरा माइन से तकरीबन सॉल्ट लोड होता है ट्रकों में और मुख्तलिफ ट्रकों में लोड होकर बारास्ता मोटरवे हमारी फैक्ट्री लाहौर काना डिफेंस रोड पे आता है, जिसका सफर 350 किलोमीटर बनता है. His artists turn these blocks into more than 200 different products. जैसे कि नेचुरल सॉल्ट लैंप है, इसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, एनिमल लिंक सॉल्ट है, ईटिंग कुकिंग प्लेट्स हैं, इसके साथ साथ वॉल्स की जो सी टाइल्स होती हैं वो हम लोग बना रहे हैं. इसके साथ हम लोग ईटिंग सॉल्ट के अंदर काम कर रहे हैं काफी सारा. Most of the work is done by hand, but drills and saws have sped up the process in recent years. उसके बाद उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है. चेक करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है. वॉशिंग के बाद उसके अंदर बल्ब और उसके अंदर वुडन बेस इंस्टॉल करके उसको पैकिंग के मराहिल में लेके आया जाता है. हमारे पास तकरीबन महीने के अंदर 10 से 15 हजार सॉल्ट लैंप्स की प्रोडक्शन है. Over in Karachi, RM Salt Pakistan grinds up blocks into table salt. बेसिकली ये इसका रॉ मटेरियल है जो कि डिफरेंट साइजेस में आप देख सकते हैं. यहाँ पर कुछ रेंजेस हैं 2 to 3 kg, 3 to 5 kg, और ये हमारी लार्ज साइड पे आ जाता है जैसे 9 to 12 हो गया और 12 to 15 kg हो गया. ये रेंजेस में होते हैं बेसिकली. Blocks are fed into the grinder and broken down into smaller grains. Workers bag and weigh 1,000 of these pouches of pink salt every hour. Like Mohammed's factory, RM Salt also makes lamps and other specialty products. After the raw material we get, we convert it with a different shape as per our order. Like you can see in the cutting machine, he is cutting different sizes.
On this saw, water prevents dust from flying up, but on the grinders, it's not possible, which is why Mohammed's staff wore masks even before the pandemic. Over at RM Salt, As you can see this facility, we have installed a vacuum through which we can absorb the dust. This is the order of USA, one of our client. We are making these goods for them, the moon shape and the heart shape as well. डबल ड्रिल के बाद हम लोग इसको वॉशिंग प्रोसेस से गुजारते हैं क्योंकि इसमें हमें मैनुअली काम करना पड़ता है, उसकी वजह है कि इसके साइजेस जो है वो डिफरेंट होते हैं. the lamps are then coated with a gel to prevent humidity from interacting with the salt, and then they're shrink wrapped. RM Salt ships 30 containers of products every month. Mohammed exports about 80% of his products, primarily to Western countries like the US, UK, and Spain, where demand has spiked in the last decade because of the alleged health benefits. यहाँ पर 3 कलर का नमक है, वाइट है, रेड है और पिंक है. इसके अंदर वाइट के अंदर है सोडियम क्लोराइड, पिंक के अंदर मैग्नीशियम है और रेड में आयरन शामिल है. 98% तो ये सोडियम क्लोराइड ही है, NaCl ही है, जो कि नॉर्मली सी सॉल्ट भी है. लेकिन इसके एडिशनली जो बेनिफिट्स हैं वो 84 मिनरल्स जो इसमें होते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है. However, it's such a very small percentage of the salt that makes up these minerals that you are highly unlikely to get any real benefit or any trace of them in your regular serving of salt itself. But nutritionally, it's pretty much similar to regular salt. It's also pretty similar tasting to sea salt. But others claim Himalayan salt has healing powers, whether inhaled, used in spa treatments, or in lamp form. There's a lot of different homeopathic remedies that can seem very, very appealing, but actually they're not grounded in evidence. And it's these false health claims that have driven the price up. Himalayan salt can cost up to 20 times the price of normal table salt. नॉर्मली जो प्राइस स्टार्ट होती है पिंक सॉल्ट पाउच की, वो नॉर्मली एक मैन्युफैक्चर से वो 60 सेंट से शुरू होती है, और एक मैं 1 kg बैग की बात कर रहा हूँ जो कि सेल होता है रिटेल मार्केट्स में अराउंड $9 होता है. But that money doesn't always make it back to the miners. They take home less than 1,500 rupees a day, not much more than the cost of this bag of Himalayan sea salt at Walmart. And those salaries have stayed the same, even though Pakistan has severed its salty relationship with India, and the pink salt is seeing growing demand abroad. पिंक सॉल्ट की डिमांड इस टाइम पूरी दुनिया में दिन ब दिन बढ़ रही है. मेरा नहीं ख्याल कि इसकी खरीदो फरोख्त में कहीं पे कोई कमी आई है, क्यों कि लोग इसको बेशुमार इस्तेमाल कर रहे हैं और दिन ब दिन इसकी फरोख्त बढ़ रही है. Luckily, the mountain won't run out of salt anytime soon. It's estimated only about 220 million tons of salt have been excavated here, nothing compared to the nearly 6.7